इम्पोर्टेंट होता है? आई थिंक ब्यूटी बहुत तरह की होती है। आई थिंक पहली ऑफ कोर्स आई मीन जो फर्स्ट इंप्रेशंस होते हैं वो आपके जो कपड़े हैं या आप कैसे स्टाइल करते हैं, सो डेफिनेटली योर स्टाइल एंड योर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई थिंक बियॉन्ड दैट आई थिंक आप जो अंदर से आप कितने ब्यूटीफुल एज अ पर्सन, डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट्स द वन ब्यूटी जो आप याद रखते हैं. So yeah, I think you as a person, if you are beautiful, that would be the most memorable thing about you. Yeah. ये well usually हम western outfits काफ़ी होते हैं, लेकिन I wanted to wear a sari क्योंकि I think this definitely is all about beauty because it's Indian. So yeah, I think that makes you beautiful. It's one of my favorite outfits. Hi. I'm presenting an award tonight. Yeah. I think it's important. Like we do award bravery, right? I mean, I think you should award beauty as well. That's a very important part of women and we as feminine beings, and we should celebrate beauty. So that's the reason why we're here, to celebrate beauty and everything to do with it. So yeah, that's why we're here. We'll talk about that another time. Yeah, we are talking. Are you any better person than you to be a father? Thank you so much. जी, बहुत चर्चा हो रही है और बॉलीवुड खुलकर सामने आ गया सपोर्ट करने के लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? मैं इसके बारे में पहले बोल चुकी हूँ एंड मैंने यही कहा था कि चाहे सच अगर आप 5 साल के बाद बोलें या 10 साल के बाद बोलें, अगर वो सच है, इफ़ इट इज़ द ट्रूथ, देन वी मस्ट हियर इट आउट. वो सुनना बहुत ज़रूरी है, उसको सही तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है, उसको इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है, उसको जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है. वो चाहे अभी हो या कभी भी हो या किसी भी वजह से वो शायद पहले नहीं बोला गया. सो आई सपोर्ट तनुश्री इवन इफ शी इज़ टेकन 10 years टू से इट. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आपके साथ जब कुछ होता है, चाहे आप रेप केसेस हैं या मोलेस्टेशन केसेस हैं, एट दैट पॉइंट यू डोंट फील कॉन्फिडेंट. बहुत रीजंस होते हैं कि आप नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आई थिंक जब भी आप बोलना चाहते हैं और आप सच कहना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हमको एज अ सोसाइटी वी शुड सपोर्ट and we should give it a hearing at least, you know. So that's very important. That's what I think. Well, yeah, I mean something did happen with me as well, and वो मेरा stand था कि मैंने उस समय फिल्म छोड़ी. वो मेरे रीजंस थे और मैंने वो रीजंस कहे भी थे. आई थिंक किसी मीडिया हाउस ने मुझे, आई मीन दे कॉल्ड मी एंड आई गेव एन इंटरव्यू अबाउट दैट. सो उस समय शायद उसको किसी ने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया या मीडिया ने शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन दैट डजंट मैटर. आई थिंक जब भी एंड आई थिंक मीडिया इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड आपकी वजह से आई होप दिस thing about Me Too movement is not just about copying the West. It should be a concern that we have for our society, and it should become more than just a fashion, statement. But do you think following Me Too movement in a country like India, where if somebody raises a voice, there's some power that is going to serve that voice? Do you think it's more difficult in Bollywood for women to come out? See, हर सोसाइटी में अलग अलग फ़र्क होता है. हमारा जो मैट्रिक्स है एज एन इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी डिफरेंट दैन वेस्टर्न. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी शुडंट एप इट. लेकिन डेफिनेटली इट्स वेरी इंस्पायरिंग जब तनुश्री या और भी काफ़ी लोग हैं जो आगे आकर बात कर रहे हैं, उनको हमें दबाना नहीं चाहिए. So it has nothing to do with the West. I think we should make it about our society. We should make the men in our society responsible for the movement as much as the women are. I think that's very important. So बहुत अच्छा है कि कुछ शुरू हुआ है और अच्छी चीज़ शुरू हुई है. सच बोलने की शायद हमको और आदत पड़नी चाहिए. So yeah, that's what I have to say. Thank you so much. Hi. Good evening. ब्यूटी कितना इम्पोर्टेंट
I think beautiful feel करना ज़्यादा important है. Beautiful लगना, you'll only look like, I think you'll only look beautiful if you feel beautiful. And I think beauty is more about just being comfortable with you, who you are, and feeling happy. I think when you're happy, you just radiate beauty. Yeah, I think that's what it is. You know, about that, I will really say कि लड़की तो मैं सेम ही हूँ. I think वो एक डायरेक्टर का विजन होता है where they show you like how they see you, और आपका जो पूरा पोटेंशियल है वो उसको निखार के लाते हैं. So I really feel कि फिल्म्स में क्रेडिट डायरेक्टर्स को जाना चाहिए. अभी जेनेटिक जो है वो है उसका I always thank my genes and I thank my mom. But there are certain directors and certain teams that just bring out, you know, that much more in you. So I will give complete and total credit to Sanjay sir and Sanjay Leela Bhansali and Shudipta for making me look like that. और also वो बहुत special लड़की थी. Like आप पूछे थे what does beauty mean? वो दिल की इतनी साफ और इतनी खूबसूरत थी दिल की that she actually looks pretty. Because of that, I think she looks so beautiful. आजकल हर कोई बात कर रहा है नाना पाटेकर और मनीषा के बीच में 10 साल पहले मीटू मूवमेंट की चर्चा हो रही है. इंडिया में मीटू मूवमेंट अब शुरू हो चुका है. आपके क्या राय इस पूरी कंट्रोवर्सी? I think it's about time कि हम लोग बात करें. Actually, you know, बात करना बहुत मुश्किल होता है. और I mean, you can see कि उनको 10 साल लग गए हैं to say something. It takes a lot to come up there in front of everybody and speak, because you know that people are going to pull you down. They're going to try and threaten you. They're going to try and make you feel afraid. They're going to do whatever it is to pull you down. So it takes a lot of courage to speak. And I feel all of us, not just women, everybody should listen and should know that this is the reality of our country and of the world. And it's about time that it changes. And the first way to change is to accept that it is happening. नहीं तो हम ऐसे ब्लिंकर्स लगा के चलते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, नहीं इट्स ओके, और हम सब डरते हैं. तो पहले हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसे होता है, and then we need to take measures to make sure that it doesn't happen. And nobody should use power in a wrong way. It's about wrong and right. You know, honestly, see, I'll tell you, it didn't. See, I've had one fairly safe experience, honestly. And when I say safe, I say that because, you know, I'm lucky that I didn't have to feel demeaned in any way. I was able to, even though I was new and naive, I was able to say thank you and leave. It lost me work, but somewhere I had that belief that अच्छे लोग मुझे काम देंगे और मुझे अच्छी फिल्में मिलेंगी. So I was lucky actually, but it's a fact, and it happened. But ever since that, touch wood, I have not had to encounter such an experience, because I think लोगों के बीच में बातें होती हैं कि this one is not up for it, and because of that, from a lot of places you don't get work, which is okay. At least I'm working with good people, so I'm happy. But I do feel like all of us should come together and be a support to each other, and not just girls. It's not just about girl power. It's not about gender. It is about anybody who's being manipulated and anybody who's being violated in any way. Actually, मैं credit सनम, मेरी स्टाइलिस्ट, और एल्किन जो मेकअप करते हैं मेरे लिए, मैं उनको देना चाहूँगी. ये गौरव गुप्ता जो मेरे बहुत ही, मतलब ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर एंड बुलीज मी लाइक अ बिग ब्रदर. सो दिस इज़ हिज. And the jewelry is by Deepa Gurnani. And yeah, I'm in town after a very long time, so I had a great time dressing up and coming, and it was fun. Yeah, I have a flight, tell me. I know. Queen, I don't know, but I've been working with Mani sir, and
a lot of other amazing directors, और मुझे वो opportunity छोड़नी नहीं थी because they're really amazing directors and एक greed होता है to work with amazing directors on amazing films. Manisha's film is a huge hit, so I'm really happy, and I have to finish all that what I've taken on, and I think by December I'll be back here. I actually am inspired by a lot of people, so I can only say that I think, as we grow, it's the inspirations in our lives that make us who we are. So I would like to thank those people. On your right, madam, ये सामने यार. On your left, on your right. What on the grabbing the waist? Yeah. On the center. Start from the left corner. Yeah, ma'am. On your center. Left corner. Hello, gorgeous. Yeah, this camera.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें फीलिंग आती है कि असली हीरो तो वो हैं, हम तो पोर्ट्रे करने की कोशिश में हमारी हवा निकल जाती है, वो तो सच में जी रहे हैं उस चीज़ को। तो हैट्स ऑफ टू देम एंड आसान नहीं है जो वो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा रहा। उरी मेरे आज तक के जितना भी छोटी सी फिल्मी करियर रहा है उसमें सबसे फिजिकली सबसे डिमांडिंग फिल्म रही है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब तो ट्रेलर भी आएगा, फिर धीरे धीरे फिल्म भी आएगी 11 जनवरी को। तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोगों को कैसी लगती है। बहुत स्टाइलिश नजर आ रहे हैं, मतलब इस तरह से आपको स्टाइल करते हुए नहीं देखा। देखिए मैं आपको सच बात बताता हूँ, फैशन के नाम पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल जो मुझे स्टाइल कर देते हैं। मैं सिर्फ पहनने का काम करता हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द टीम ऑफ एल जिन्होंने मुझे स्टाइल किया है। राहुल हु स्टैंडिंग है। एक सवाल और, आजकल बॉलीवुड में बहुत चर्चा हो रही है नाना पाटेकर और अनुष्का दत्ता के विवाद पर, और बॉलीवुड खुलकर सामने आकर मीट मूवमेंट की बात भी हो रही है, आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, मेरी राय है कि देखिए किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट या हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे या कहीं भी अच्छी बात नहीं है। और एट द सेम टाइम देखिए अगर कोई आता है और उस बारे में चर्चा करता है जो उनके साथ पर्सनली हुआ हो, तो लीस्ट वी कैन डू इज़ उनको सुने, उनको वो रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो आसान काम नहीं है कि इतने पूरे दुनिया के सामने आकर वो बात कहना। तो उनकी बात सुने एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू दी अक्यूज़र एंड दी अक्यूज। तो दोनों पार्टी को सुनना बहुत ज़रूरी है एंड जब भी इतनी ग्रेविटी की कोई चीज़ सामने आती है तो उसे प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। थैंक यू। What does what mean to me? It comes as a big surprise to me, क्योंकि कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी अपीयरेंस के लिए मुझे अवार्ड मिलेगा, पर जब मिल रहा है तो अच्छा लगता है। यू फील मोटिवेटेड। अब आप करण जी से पूछिए, देखते हैं। मैं भी उसका जवाब चाहता हूँ। डन, थैंक यू। मैं आपके साथ आना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I'm running. मेरे लिए आई थिंक इनर ब्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट. आई डोंट बिलीव इन लाइक यू हैव टू वेयर दिस एंड वेयर दैट टू लुक ब्यूटिफुल. आई थिंक इफ यू फील ब्यूटिफुल यू आर ब्यूटिफुल. आज मैं पॉश प्राइड मैंने पहना है. मेरी स्टाइलिस्ट है श्रीजा राजगोपाल एंड शी ऑलवेज मैनेजेस टू मेक मी लुक प्रेजेंटेबल. दिस इज ऑल हर. लिटिल थिंग्स अब नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो गया है. उसका दूसरा सीज़न, दोनों सीजन रिलीज़ हो गए. और हाँ, बहुत ही मतलब so far it's been great. The feedback has been amazing. We are very excited about it and so is everyone else. और जितना लोग रुके थे इसकी रिलीज़ के लिए उतना हम भी रुके थे. तो थैंक यू.
ब्यूटी आई थिंक फॉर एवरी वुमन और मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, हर तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी। नहीं, मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, ये तो ब्यूटी अवार्ड्स है एनीवे, एंड आई जस्ट कम टू see what the event is about and all the winners and congratulate them and celebrate their greatness. I hope so, jaldi, but फिलहाल nothing to announce. जी, मैंने कभी सीरियल्स छोड़े नहीं हैं, मैं कुछ भी, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ एक्चुअली। आई रियली वांट टू एक्सप्लोर द मीडियम ऑफ वेब ऑल्सो, क्योंकि मैंने टीवी किया है और फिल्म किया है, तो आई थिंक वेब विल नाउ बी द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लोर। हाय, एज इन not really, no substantial change as such. I am feeling nice. I am looking forward to some good work, and touch wood, there is some good work coming. So that's the only change, and I'm excited about it. How would I define beauty? I wish I'd learned some answer and come here to define beauty. But I think beauty for me is an all-round thing. I think you're beautiful when you feel beautiful and you think beautiful. Sorry? And could you just define your dress for tonight? My dress for tonight. Please tell me the name again. Yes, so I'm wearing a Lena mane, and it's a metallic silver dress, and I think it goes with the trends right now. And jewelry also. So these are some diamonds that go well with my dress, and yeah, it's keeping it minimalistic. Name please? Gehna Jewelers. Thank you. अच्छा। Good evening. Let's see. I hope. I don't know. You'll find out once I'm back from the gate. Sorry? Good question to ask. I don't know. I think every girl should feel beautiful every second of their life, because girls usually are always complaining about all the other things, including their skin, their weight. But I feel every girl is beautiful, and I feel beautiful every morning I wake up. दिशा, आजकल बॉलीवुड में तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के विवाद के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। बॉलीवुड खुल के इस मुद्दे पर बात कर रहा है। हालांकि बॉलीवुड ज़्यादा इस बारे में, बॉलीवुड स्टार ज़्यादा बात नहीं करते ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज पे, और मी टू मूवमेंट की भी शुरुआत माना जा रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे? जी, I'm sorry, मुझे ज़्यादा knowledge नहीं है, so I can't talk about it. Everybody's talking about it. I don't have knowledge. How can I talk about something I don't have knowledge about? Have you ever faced any kind of harassment, or anybody has proposition to you because you know that it's not that right? No, never. But never is there stories like for outsiders and all sorts of
I don't know. I've also heard few stories about people going through, but I've never honestly gone through any of it. Like my personal experience, it's people have been very nice and kind, and I've never gone through any of this experience. Ha! It's coming next year. Shoot is going well. We're gonna be starting our shoot end of the month, and yeah, it's nice. It's different. Gee, I've shot. You'll watch it, no? I don't know how much I can talk about the film. I'm so sorry, but we are doing some crazy stuff, and it's. I think it's different for everybody, and it's gonna be very exciting. No, you'll find out what I play. Thank you so much. Hello. I think to be easy. कैसे हो? So just to be easy, I think that's my style mantra. I don't like really do too much. Whatever I feel happy in, I wear. Thank you so much. Thank you. It's been nice. People have liked the performances. Critics have liked the performances. So you feel nice because it's, you know, it takes almost an year to make a film, and and then if people like your performances, critics praise you, you always feel a little humbled. So happy. Sorry? Yeah. So Mirzapur is releasing. It's a web series. So it's going to release next month, I guess. It's for Amazon by this thing. जी नहीं, ये बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, ये गैंगस्टर ड्रामा है, तो इसमें कोई हंसी मजाक नहीं, कोई रोमांस नहीं, हार्डकोर एक्शन. I think least we can do is just hear her out, just respect her, not judge her on her character or anything. Just be patient with her. Just hear her out. Is the least we can do. Thank you.
Wait. Anupriya, wait. A very pleasant evening. Thank you. Just to have a great time. Sorry? Well, this is by Rippy and I'm loving it. It's very blingy as you can see, but it's extremely elegant. So, makes me feel beautiful. I hope so. She's done a lot of effort here. And yeah. And you always tease us, like tease us training for your appearances. Is it? Yeah. I didn't know that. Thank you for saying that though. And when can we see next? I hope so really soon. There's a movie that I've been waiting for that's called Maya. It was directed by Nagesh Kukunur. So we are hoping the release. I really hope it comes out. Next I'm a part in Sacred Games 2. So I hope you can see me there. And Sacred Games has become like a sort of a brand. It has. Internationally acclaimed and Yes. we have also seen Sacred Games. See, in the first season I was hardly there, so not for myself, but yes, as a series it was really loved. So yeah, we are all very excited about it. Same to you. Thank you. Third mark now. Look here, please. Down. Okay? Look here down. Yeah. And here straight. From there, look. Yeah, up here. Excuse me. Yeah, straight. Hi, how are you? There is something about the evening. Really glamorous and beautiful night. I'm very excited to be here because this is my debut in Elle Awards. So I'm very excited, very happy to be here, and yeah, I'm wearing Nikita Tandon. So I'm even more excited. New events coming up, new awards coming up. So looking forward to just go inside and see. Glamour, I think it's the right state of mind with the confidence how you carry it. It's just not related to what you wear. You know, it's yeah. Right.
you know, it's very unfortunate to have happened to anybody, and especially Tanushree, and I think it's very courageous of her to have come out and spoken like this. We can't be just getting away by the fact saying, okay, I don't know much about it, what must have happened, I wasn't there, क्या truth है क्या नहीं है, because कोई एक level पर जाकर इतना झूठ नहीं बोल सकता है, and the version can't be, you know, changing every day. So I personally feel I'm very saddened about the fact, I'm horrified that if she had to face all this, it's very sad, and but it at the same time it has given courage to other girls, women. If something like that happens to them, you know, they can come out and talk, because डर बैठ जाता है हर किसी के अंदर, and ऊपर से people, you know, that peer pressure and industry pressure, that people keep saying, अच्छा मत बोलो, you know, you will be tagged as this, people won't want to work with you, ये तो लड़की जाके बोल देती है, and things like that. So I think it's giving courage to all the girls that stand up for yourself. See, I haven't faced any harassment as of now. It's the mindset of people which needs to be changed. I come from a completely different background. I am a medical student, dental student. All sorts of things happens in all types of industries, because, you know, it's the mindset of people. But yes, there are people who talk, you know, sad things. It's a very sad thing that you meet casting directors, they think, oh, girl is new. You know, they happen to say things. I personally haven't faced any of the casting couch and harassment so far, but yes, they make comments, they say sad things, and it's up to you how you take it, especially for a person like me who is not from industry, who's not a star daughter, who doesn't have a surname, you know, comes from a big different background. So it's very easy to get bogged down by the situation. But you have to have your own optimism towards it, because ultimately it's your dream. You have taken care of your thing. So yeah, this is the only way forward. Thank you. Thank you. चल बार बार यही सवाल पूछते हो तुम. ब्यूटी कितना इम्पोर्टेंट है? किस ब्यूटी की बात कर रहे हो पहले तो ये बताओ. My beauty. My beauty. See, for me, beauty is inside as well as outside, and I feel like there is it's a combination of both. So to each its own. You know, whatever, whoever, if somebody feels comfortable in being whatever, that is beauty for me. You know, the comfort zone in being yourself is beauty for me. बहुत ज़बरदस्त चल रहा है. अभी भी सोनाक्षी को बहुत बढ़िया सा अवार्ड मिला है. सोनाक्षी बहुत अच्छी लग रही हैं. I want to congratulate her for looking gorgeous like that. Thank you. अच्छा. Yeah. Yeah. अभी पूछोगे? ये सब डगमगा रहा है यहाँ पे. मेरे घर आइए, I'll give you proper interview. Okay? Take care. Bye. Award
अवार्ड्स पे बी मोर एल का अवार्ड मिला, जो कि आई थिंक इज़ फॉर अ वुमन हु इज़ रियल कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ हू शी इज़, एंड आई थिंक that does suit me because I've always kept it very real, hence Asli Sona. So thanks to Elle for giving me this award. मुझे तो बचपन से ही लगता था मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बट देयर वाज अ फेज इन माय टीनेज इयर्स वेयर आई वेंट थ्रू अ वेरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई वुड से, एंड तभी मुझे खुद में एज इन कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था. सो आई यूज्ड टू नेवर थिंक कि ब्यूटी क्या है, खुद को संवारना है, बाहर जाना है तो कुछ इयरिंग वरिंग पहनो, मुझे कभी मैं ये सोचती नहीं थी, एंड आई वाज अ कंप्लीट टॉम बॉय. सो देन आई स्टॉप थिंकिंग कि ये ब्यूटी व्यूटी छोड़ दो, एंड आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग देन अगेन दैट कीड़ा केम. सोनाक्षी, आजकल तनुश्री और नाना पाटेकर के विवाद में बहुत बात हुई और बॉलीवुड खुलकर समर्थन में आ गया है. मी टू मूवमेंट की बात हो रही है इंडिया में. सॉरी, मी टू मूवमेंट की बात हो रही है और बॉलीवुड बहुत सपोर्ट कर रहा है तनुश्री को, जो सर्वाइवर है उसे. आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आई थिंक इस मुद्दे पर जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ की कहानियाँ होती हैं, एंड आई थिंक ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं कि कई बार जब कोई आगे आता है, मीडिया में बहुत चर्चा होती है, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं और निकलता कुछ और है. तो आई थिंक विदाउट नोइंग बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी वी शुड नॉट गेट इनटू द मैटर, एंड ऑफ कोर्स इफ अ वुमन डज फील अनसेफ इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट, आई थिंक दैट इज एनीवे वेरी रॉन्ग. नो वुमन शुड बी मेड टू फील अनसेफ at where she goes to work, of course, and strict measures should be taken to make sure that a woman feels safe wherever she is. I won't be able to say, because I do know a lot of people who are not a celebrity's daughter or a powerful person's daughter and who have also not faced it. So I don't think we should generalize and categorize women in any profession, in any strata of society, are, succumb, as in, are a victim to this and are also not a victim to this. Fortunately, no, I haven't. But what I would say is not to the girls, but I think to our government, is that to incorporate self-defense as a subject, compulsory subject in schools. And I've been saying this for the longest time, because I feel if a girl knows how to protect herself from a very young age, I think that is the handiest weapon that she can have for herself. She won't have to depend on any man or anybody else to take care of her. So I think this should be put in the curriculum of schools, self-defense. Sonakshi, apart from, in addition to being awarded for your acting, you have been now awarded, presented with awards for your personality, your appearance. Do you think there's a constant shift which has happened and people are recognizing? I mean, it's nice. It feels good, but I feel like an approval for my personality is not something that I have always, really strived to achieve. Agar hota hai, if people like it, appreciate it, then that's good. But I won't go out of my way to be someone who I'm not. I want people to like me for who I am and how I am. And if that's happening, I think that's amazing. Fortunately, I work with very, very talented people, stylists, designers, so I don't have to, apply too much of myself in it. But of course, there are certain styles, certain outfits that I like, that I don't like, and my inputs will always be there, because as an individual, at the end of the day, you have to wear what you have to wear. So, little bit input is there, but I work with very, very talented people. sonakshi, आपने बताया था कि next आप कमेंट में देखेंगे, जी। तो पहले भी कुछ 2-3 स्पेशल सॉन्ग्स कर रही हैं आप, am I right? एक special song. वो कब आएगा? जो टोटल धमाल में है, वो जब फिल्म रिलीज होगी, आई थिंक उसके कुछ दिन पहले सॉन्ग रिलीज होगा, एंड मुंगड़ा का रीमेक है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. वेल, अजय इज देयर एंड आई एम देयर. थैंक यू. वापस क्या?
guys, thank you.